Hello everyone. In this video, we'll discuss about design of adder circuits. And in that case, first we'll see how to design half adder circuit, and then we'll come across how to design a full adder circuit. Now, basically, all these circuits are a part of combinational circuit. I'm writing it here. These all are a part of combinational circuits. Now, what do you mean by combinational circuit? So, circuit whose output depends on present input only. A circuit whose output depends on present input only is called as the combinational circuit. And in that, the first type of circuit we'll see is called as a half adder circuit. Now, whenever you want to design either combinational circuit or sequential circuit, we have to follow three steps. The first step is going to be derive the truth table. Second step will be obtain logic expression, and third step will be draw a logic diagram. Just we have to follow these three steps. Always remember, first step, from the given circuit or definition, draw the truth table. Second, go for the logic expressions. Now, what is logic expression? It is nothing but the relationship between output and input. And lastly, we have to draw a logic diagram. So we'll follow these three terms for every circuit from here onwards. Out of which, let us start with the first one. That is nothing but how could we design a half adder circuit. Now, what is half adder circuit? A circuit which adds two inputs, namely A, B, and it has two outputs, namely sum and carry. So half adder is a combinational circuit that adds two inputs and it produces two outputs, namely sum and carry. तो उसको हम बोलेंगे हाफ एडर सर्किट. अब ये किस तरह से काम करता है? सो अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखते हैं, सो आई कैन राइट a plus p, where a can be a single bit, b can be a single bit. So when I add these single bits, so the first term will get as output will be sum, and along with that, whatever the term is generated, that is called as carry. So we'll get sum and carry. So we have specified two inputs and two outputs. Now start karte step number 1 se. Step number 1 will be truth table. So I'm simply concentrating on how to draw the truth table. That will be our first step. So we have seen so many terms related to the truth table. So in case of truth table, first we draw the input terms as A and B. We have two inputs A, B, and here I will write output terms as sum and carry. Now let us concentrate on these two terms. We have two inputs, that means four combinations, either 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. This is going to be our inputs, and 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Now let us add them. Start with this one. 0 plus 0, definitely sum 0, carry 0. Next, 0 plus 1, sum will be 1, carry will be 0. 1 plus 0, sum 1, carry 0. Now lastly, when I add both ones, we'll get sum 0, carry 1. Remember, when we add two input bits with maximum value 1, 1, so there will be sum 0 and carry will be generated. So this is going to be our truth table. Once the truth table is over, our second step will be to draw the logic expression or to fetch the logic expression. We'll write this as logic expression. Now we have two output terms, sum and carry. For that case, we'll use a two variable k-map. I'm writing it here. Sum will take two inputs as A, B with the values 0, 1, 0, 1. Now what we have to do, we have to check the sum column, and in that we have to check the combination whose output is 1. यानी कि sum के कॉलम में हमें ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है जहाँ पर आउटपुट 1 है. तो आप देख सकते हैं sum is 1 for this combination 0, 1, यानी कि डेसिमल इक्विवेलेंट 1, और ए कॉम्बिनेशन है डेसिमल इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा. आई एम राइटिंग इट हियर. सेल नंबर 0, 1, 2, 3.
written. Now we'll place the value 0 1 0 1 यानी सेल नंबर 1 में 1 रखेंगे, 1 0 देख सकते हो, 1 0 इट इज ऑल्सो 1. अब वही प्रायोरिटी, वी हैव टू चेक वेदर पेयर कैन बी फॉर्म्ड. अब देख सकते हैं 1 के एडजेसेंट 0 3 कुछ भी नहीं है, सो ये आइसोलेटेड हो जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो आइसोलेटेड. बेस्ड ऑन दैट आई एम राइटिंग इट हियर. सम इज इक्वल टू, फर्स्ट आई विल राइट फॉर दिस टर्म a0 मीन्स a बार, दिस इज a, ये हो जाएगा b बार, दिस इज b. what will get a bar into b प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट में, दिस इज द सेकंड टर्म. सेकंड टर्म में देखिए a का वैल्यू 1 यानी a इंटू b का वैल्यू 0 दैट विल बी b बार. a बार b प्लस a इंटू b बार, इट इज एज गुड एज आर XOR गेट, सो विल राइट दिस एज a XOR b. वो सिंप्लीफिकेशन हो गया XOR गेट का. नाउ विल बी गो फॉर कैरी. अब देख सकते हैं कैरी 1 है, ओनली 1 कॉम्बिनेशन व्हेन A1 एंड B1, यानी कि हमें कुछ की में ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम ड्रॉ करेंगे. लेट्स ड्रॉ देम विथ इनपुट A B, सेल नंबर 0 1 2 3 एंड आई एम प्लेसिंग दोज वैल्यूज एज इट इज. आप देख सकते हैं कैरी इज़ 1 फॉर दिस कॉम्बिनेशन A1 B1, A1 B1 यानी सेल नंबर 3 में आ जाएगा 1. नाउ दिस इज अगेन आइसोलेटेड, सो विल राइट कैरी इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं A1 यानी कि A है, B1 है यानी कि हो जाएगा B, सो कैरी आ गया B. सो सम इज इक्वल टू A XOR B, कैरी इज इक्वल्स टू A इंटू B. नाउ वी गॉट दिस टू एक्सप्रेशन. अब इस एक्सप्रेशन को हम रियलाइज करेंगे यूजिंग लॉजिक डायग्राम कॉन्सेप्ट. So let us draw the logic diagram. Okay, so let's draw this. First we have to take the input terms as a b, so we'll take the first input term as a, second input ले सकते हैं हम b. अब sum is equal to है हमारे पास a XOR b का इक्वेशन. सम के लिए यानी कि एक XOR गेट लगेगा, सो ये दो इनपुट के अक्रॉस विल प्लेस वन XOR गेट विच विल बी लाइक दिस. इसको हम कॉल करेंगे सम. हो गया. अब कैरी इक्वेशन है हमारे पास a इंटू बी. नाउ व्हाट वी नीड एंड गेट मल्टीप्लिकेशन के लिए, सो विल टेक वन एंड गेट. उसके पहले ये इनपुट को फेच करेंगे, दिस इज फर्स्ट इनपुट, दिस इज आवर सेकंड इनपुट, और दोनों के अक्रॉस विल प्लेस वन एंड गेट एंड दिस विल बी आवर carry. So this becomes the logic diagram for half adder circuit. Always remember 3 steps: first truth table, second expression, and third logic diagram. Thank you.